Good morning, everyone. Greetings for the day. I'm Sayukta from beautiful Spotless Skin team. I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of your skin is important for more than just your appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. If you take care of it, it can take care of you. This is why it is so important to have a well thought out skincare healthy routine, especially during monsoon. And fungal infections are very common during the rainy season. Having a daily skincare routine helps you to look your best and put your best foot forward when you go out into the world and maintain hygiene condition in monsoon season to avoid fungal infection. So let's connect today with our skin expert, Dr. Trupti Desale, live from Nashik, to enlighten us on the topic of skin care and monsoon and also about fungal infections. Dr. Trupti is a founder and consultant dermatologist of Niti Skin and Hair Clinic, Nashik, since 2016. She passed her MBBS from BJ Medical College, Pune, and MD from IPGMER, Kolkata. She has presented various papers and posters at state, zonal, national, and international level and associated with various research projects. Today, Dr. Trupti will share with us on skincare in monsoon and fungal infection. A very warm welcome to you, Dr. Trupti. Hope you're doing good. Yeah. Good morning, everyone. Yeah, I'm good. I hope everybody is doing good and enjoying the monsoon season. So, hello, everyone. Yeah, and as you know, during monsoon season, the skin-related issues, just increases. We see a surge in the number of issues related to skin. So today we are going to, discuss those, that how to take care of your skin during monsoon and fungal infection. So, doctor, to start with, what effect does monsoon weather have on various skin types? Okay. See, first of all, again, hello everyone. It's very nice to connect with you all again. Now, monsoon is one of my favorite season and of course must be of many others. But while enjoying the weather, we should also take care of our health, especially our skin. Because monsoon can bring lot of, infections like bacterial infection, fungal infection, and allergies. So a lot of skin problems may start with the rainy season. So especially for oily skin people, what happens is because of the increased humidity in the environment, there is excess sebum secretion or oil secretion on the face. So that humid climate makes your skin more oily and sticky, which in turn creates clogged pores or it block your pores, and the acne prone skin people may experience more breakouts during the season. And for dry skin people, what happens is because of again the humidity and excess moisture in the environment, there's a lot of water loss from your skin and you feel dehydrated and dull. So it is very important to keep yourself hydrated. And this dry skin and dull skin may invite or it may increase the incidences of eczemas and allergies and other itchy skin conditions. Right. So we from this can understand that monsoon has an impact on all type of skins, and for that, a good skincare routine is very, very, very important. So, doctor, what is the best skincare routine for your skin type this monsoon? See, the basic skincare routine remains the same for all skin types. Just the products you choose depends according to your skin type, right? So, basic skincare routine includes 3 steps in your daily routine. The very first step is you should cleanse your face regularly with a very gentle cleanser. As I said, because of the humidity, there is a lot of sebum or oil secretion on the face. So, it's very important to cleanse your face regularly. Because especially for oily skin people, they may feel a lot of stickiness on the face. So cleansing is very important. Then the second step comes, which is moisturizing your skin. Now again, यहाँ पर लोगों को लगेगा कि oily skin है, already हमें इतना sticky लग रहा है, then why should I apply a moisturizer? Right. Basically, there is a difference between oil and a moisturizer. Moisturizer hydrates your skin.
So it balances the water content of your skin. So there's a difference between water and sebum, right? So ऐसा नहीं है कि oily skin people को moisturizer नहीं लगाना चाहिए. They should choose a water based non greasy and non comedogenic moisturizer for their skin, right? So moisturizer is again very important to hydrate your skin. The third and the most important layer on your skin is sunscreen. Yeah, again the question comes, many people ask me, अरे अभी तो बाहर धूप नहीं है तो मैं नहीं लगाती हूँ सनस्क्रीन, या मैं इंडोर्स ही रहती हूँ तो मैं नहीं लगाऊं सनस्क्रीन तो चलेगा, because I am not very exposed to the sun. But it's not like that. See, sunscreen is basically to protect your skin from UV rays. Now UV rays are there all the time. You see them, you feel them, or you don't, right? So अगर हमें धूप नहीं दिख रही है, but इसका मतलब ये नहीं कि the sun has not risen, right? So UV rays are there, so you have to apply sunscreen all 12 months of a year. May it be whatever season, but it is very important that you block your skin. Like sunscreen should be the last layer on your skin whenever you go out, right? Yeah. So you just have to choose as I said, a product should chosen according to your skin type, but cleansing, moisturizing and sunscreen is very important in your daily skincare routine. Okay, so immaterial to what skin type you have, of course, the product or its other, things will change, but the routine will remain the same. You need to cleanse in, you need to moisturize, you need to use sunscreen, and sunscreen is like the jacket on your skin. And again, a very related, question, that skincare tips and do's and don'ts for this monsoon, because again, we are, clueless what to do, what not to do. Yeah, right. See, now do's mein, I think in basic skincare routine I have covered a few things. Do's mein, what is more important is cleanse regularly, moisturize and apply a sunscreen. Along with that, what is more important is drink a lot of water to keep yourself hydrated. Because जैसे मैंने बोला कि humidity की वजह से there is a lot of water loss. Your skin feels dull and dry, dehydrated. So drink a lot of water, eat healthy, eat salads and fruits. These all keep your skin hydrated. And of course, hydrated skin means a glowing skin, natural glowing skin. So hydration is very important. So drink a lot of water and wash immediately whenever you come out, whenever you come home after getting wet in rains. You have to wash your face immediately, because this rainwater contains a lot of germs or bacteria, so they may infect your skin. So it's very important to clean your face. So and one more important thing, when I say cleanse your face regularly, you should not wash your face more than twice daily. Sometimes हमें लगता है कि बहुत sticky हो रहा है, oily skin people tend to wash their face regularly, constantly they're splashing water. So multiple face wash ये भी skin को extra dry कर देगा और damaged कर देगा. So once or max twice daily face wash is enough. इसके बावजूद if you feel कि बहुत sticky फिर भी लग रहा है in the middle time during the afternoon, you can just splash cold water or you can use wet tissues to remove the excess oil. But face wash should be used once or max twice a day, not more than that. तो स्किन चाहे ऑयली हो, ड्राई हो, दो बार से, बिकॉज अगेन एज यू सेड कि जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं उनको लगता है कि बार बार ऑयलीनेस लग रहा है या स्टिकी लग रहा है, तो दे कीप ऑन वॉशिंग देयर फेस विद ऑफ कोर्स क्लेंजर्स एंड फेस वॉश. It's not a good practice, right? No, not more than 2. So don'ts में आ जाता है cleanse your face with a good face wash, but not more than 2 times a day. Scrub, you can do scrubbing, but not more than once a week. Scrubbing भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. People have habit of 2 to 3 times a week they keep scrubbing their face. Now these scrubbers few scrubbers can actually irritate your skin if used over, right? So face wash two times a day, scrubbing once a week is enough. Then don't use too hot water in this season because of the dehydration risk. बहुत hot water भी skin का moisture खींच लेता है, so आपका skin और dry feel करेगा. So don't use too hot water. You can use the normal water or cold water. Again, one important don't,
for monsoon season is don't apply very heavy makeup. Okay. जिनको डेली प्रोफेशन ऐसा है, जॉब ऐसा है कि डेली मेकअप अप्लाई करना पड़ता है, बट देन फॉर मॉनसून प्लीज कीप योर मेकअप वेरी लाइट because too much of application of makeup, as I said, because of the excess oil secretion the pores are blocked. और उसमें अगर हम बहुत सारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक्ने प्रोन स्किन वालों को इरप्शंस और ब्रेकआउट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्किन एलर्जीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. And if at all, if you want to use makeup, you can choose a waterproof or non-comedogenic cosmetic products, but keep your makeup layer on the skin very light and don't sleep with the makeup on. Okay. Always remove the makeup or clean the makeup before going to bed. Okay, so some very important do's and don'ts for this monsoon. इसी में से कुछ सवाल जो मेरे जहन में आ रहे हैं. डॉक्टर, आपने कहा कि मेकअप बहुत लाइट होना चाहिए and definitely रात को मेकअप लगाकर नहीं सोना है. Now, what about all the applicators that we are using, you know, especially during monsoon, क्योंकि आप ब्रश यूज करते हैं, अलग-अलग पफ, स्पंज यूज करते हैं, and they don't tend to dry that easily, especially during monsoon. Yeah. How bad it can be for our skin? Yeah, it can basically not only the applicators, even the clothes what we wear sometimes वो भी नहीं सूख रहे हैं because Right. of the season, and even they are half dried, they have half moisture still there. So ये सारे products we should make sure that we have extras during the season, and we don't use the moist or dampened material or applicators. And even the clothes, especially the inners, they should be ironed. If they are not completely dry, you should use ironed clothes. You should use loose clothing, not very tight, because moisture lock nahi karna hai hame. That may you know, give rise to a lot of infections, fungal infections example that will come to later. So use loose clothing and use dry and iron clothes, and use extra dry applicators or makeup materials. Don't use moist or dampened materials. Fair enough. And you also mentioned that scrubbing should be restricted for just once in a week. Now the question is, because Indian घरों में हमको home remedies पर बहुत भरोसा है, and home remedies में again we use, you know, end up using a lot of scrubs. भले ही वो बिल्कुल basic सामान हो, चाहे वो बेसन का उपटन हो, oats हो, और इसे हम again regularly use करने लगते हैं, तो हमको लगता है कि स्क्रब यानी जो दुकान से लिया है, तो ये तो स्क्रब नहीं है, ये तो उपटन है. Ultimately वो काम तो स्क्रब का ही कर रहा है, तो उसको लेकर आप क्या टेक है? उसको लेके ऐसे कि सी अमंग्स दी होम रेमेडीज या बेसन एंड दीज ये चीजें जो यूज करते हैं ये थोड़ा फ्रीक्वेंटली हम यूज कर सकते हैं, बट ओट्स एंड कोई कॉफी एंड ऑल ये सब यूज करता है, ये रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए. बिकॉज अगेन ये किसकी स्किन के लिए इरिटेंट का काम करेगा, यू नेवर नो. दिस मे वर्क एज इरिटेंट. सो रेस्ट्रिक्ट अगर होम रेमेडीज से कर रहे हो, इफ यू नो यू हैव यूज्ड इट अर्लियर, इट्स नॉट इरिटेंट फॉर योर स्किन, max you can extend to twice a week. More than that, if you're cleansing your face daily, so you don't need a lot of frequent scrubbing. Once or twice a week max is okay. Okay. And how can we protect our skin during this monsoon season? Okay, see, protection of our skin can be two ways. एक तो घर से बाहर जाते समय हम स्किन को प्रोटेक्ट करके कैसे जाए, which is the daily routine, like I said, moisturizer and sunscreen. एंड एक होता है जब हम बाहर से वापस घर में आ रहे हैं, तब हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर स्किन, बिकॉज वी हैव बीन आउटसाइड, वी हैव बीन एक्सपोज्ड आवर स्किन टू मेनी allergens or many bacterias in the air, in the rain. So what is very important is the moment you come inside, first of all wash your face immediately with plain water so that the rain water does not stay on your skin for a longer time. अगर आप पूरा भीगे हो तो take a shower. It with only water is also okay, but you have to clean the rain water from your skin. So washing it immediately after you come from outside will protect your skin from getting allergies or infections from the rainwater. And while going out, you have to apply moisturizer and sunscreen. Okay. Sometimes if you don't want to apply too many layers, nowadays there are a lot of moisturizers which have sunscreens included in them. So you can choose that product also. So you have to apply only one layer which will hydrate your skin as well as which will
give you UV protection. Okay. And doctor, which face wash is best, especially during monsoon? Okay, now there are a lot of face wash out there in market, right? There are a lot of ingredients, and these are always combination of ingredients. Okay, you cannot choose a one single face wash or one single ingredient will not work. It has to be always a combination. For especially oily skin people, you can use a salicylic acid or glycolic acid based face wash, because that will clean your clogged pores in a better manner, and that will reduce your sebum secretion. For dry skin people, salicylic glycolic acid they should avoid. They should use just licorice extract or niacinamide or aloe vera based face washes, which will not make their skin even dry. So good basic face wash is enough for dry skin people, but oily skin people can use this medicated face wash, including salicylic acid and glycolic acid, but not more than 1%, because से ज़्यादा percent will tend to make their skin dry. More than 1% content face wash you should only use with doctor's prescription if at all your skin actually needs that concentration. Okay. तो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से और उसमें भी क्या होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन है या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सा मॉइस्चराइजर, कौन सा फेस वॉश, कौन सा सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए बेस्ट होगा। And doctor, why it's needed to have a skincare routine for the monsoon? मतलब monsoon में एक तरह से हम देखें तो जैसा आपने कहा भी एक normal perception ये है, धूप नहीं है, सूरज नहीं है, मौसम एक तरह से humid है लेकिन फिर भी pleasant है, अच्छा है। तो ऐसे में एक skincare routine की जरूरत आखिर है क्यों? जैसे मैंने अभी बोला क्यों होता है, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत एक तो एक्सट्रीम्स में या तो बहुत ह्यूमिड स्टिकी बना देगा, ब्लॉक पोर्स कर देगा, और अगर आपने स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो किया, दिस इवेंचुअली इन फ्यू डेज और मंथ्स विल क्रिएट लॉट ऑफ ब्रेकआउट्स ऑन योर स्किन एंड विल मेक योर स्किन रियली बैड। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट व्हेन यू अगेन गो आउट इन रेन, ऑलरेडी ब्रेकआउट्स है, उसमें आप अगर बारिश में भीग रहे हो तो दे गेट इन्फेक्टेड वेरी इजीली। सो लॉन्ग टर्म डैमेज बहुत पॉसिबल है। इसीलिए रेनी सीजन, वही मैंने बोला, ये थोड़ा सा क्वेरी होता है कि बहुत अच्छा सीजन है, धूप नहीं है, कुछ नहीं है, ड्राई नहीं हो रहा है, तो क्यों करना है? क्योंकि देयर आर सम बैक ऐसे होता है ना, जो बैक स्टेज चीजें हो रही है वो हमें अभी नहीं पता चल रही है, तो वो चीजें हमें जब स्किन अफेक्ट होगी तब पता चलेगी। So it's better to follow a daily skincare routine to keep your skin hydrated and out of or no oil or excess sebum on the skin. For that you need to follow a basic skincare routine, because आपका skin dull हो जाता है। Many people will agree कि though you feel कि there is no sun out or there is no the weather is very pleasant, still they will feel कि वो सुबह fresh होते हैं तब they feel their skin very good, but जब तक शाम होती है they feel my skin has gone dull, even if they are indoors. So this dullness is basically because of the environment का effect on your skin. जो वो आपका मॉइस्चर खींच रहा है, जो वो आपका स्किन को डिहाइड्रेट कर रहा है, डल कर रहा है, कि वो डलनेस है। टू अवॉइड दिस, टू हैव अ फ्रेश एंड ग्लोइंग स्किन ऑल द डे राउंड 24 आवर्स, यू नीड टू फॉलो अ गुड स्किन केयर। एग्जैक्टली तो लॉन्ग रन में भी हमारी स्किन जो है हेल्दी रहे, ग्लोई रहे। जो कई बार जैसा आप कह रहे हैं कि इवनिंग तक हमारी स्किन डल हो जाती है, पैची लगने लगती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर हम एक बहुत सिंपल सा स्किन केयर रूटीन व्हिच कंसिस्ट ऑफ cleansing, which consists of moisturizing and sunscreening your skin. ये अगर हम इतना सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने स्किन को बहुत अच्छा बनाकर रख सकते हैं। Now let's move to a very focused, very important topic, and that is what are these skin diseases that occurs mostly during monsoon, doctor? मॉनसून में जैसे हम बोलते हैं कि रेनी सीजन जब आता है तो बहुत सारे इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं इन द एनवायरमेंट, राइट? सो एक तो बिकॉज ऑफ द ड्राई स्किन पीपल को और ड्राई स्किन कर देता है, तो वो इची स्किन कंडीशंस एंड एलर्जीज एंड एक्जिमास इंक्रीज कर देगा।
For oily skin people, acne, breakouts and blackheads, whiteheads, ये सब बढ़ जाता है. Other than this, there are a lot of insect bite allergies. Lot of people have mosquito bite allergies, insect bite reactions, and lot of bacterial infection can occur. Folliculitis हम बोलते हैं. Folliculitis is basically bacterial infection of the skin and hair follicle. So that is also very common. Fungal infection is very common. So these all are the skin problems commonly which can increase in incidence because of the monsoon and the winds. And as you have mentioned fungal infection, please tell us about fungal infection. Now see, fungal infection अब now very easy to understand. जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होता है, वैसे ही फंगल इन्फेक्शन होता है. फंगल इन्फेक्शन मतलब फंगस ग्रो हो रही है. अब नॉर्मली फंगस का फेवरेट वेदर और फेवरेट एनवायरनमेंट होता है मॉइस्चर. वी नो कि जहां एक्सेस मॉइस्चर होता है या लॉन्ग रन मॉइस्चर जमा हुआ है या गीलापन है, वहां फंगस ग्रो होती है. सिमिलर थिंग गोज फॉर योर स्किन. हमारी बॉडी के जो हम बोलेंगे स्वेटी एरियाज है या मॉइस्ट एरियाज है, लाइक अंडर आर्म्स, चेस्ट, कमर में एंड ग्रोइंस में, बटक्स में, ये सारी एरियाज है जहां वी स्वेट अ लॉट एंड दीज आर फ्रिक्शनल एरियाज. सो फ्रिक्शनल एरियाज होने की वजह से यहाँ पर मॉइस्चर ऑलवेज लॉक रह रहा है, हवा नहीं जा रही है. So because of the excess moisture locked in this area, these body areas are very prone for fungal growth on our skin. So fungal infection basically जैसे हमको पता है कि ये जो जिस एरिया में गीलापन या मॉइस्चर लॉक रहेगा वहां ज्यादा ग्रो करता है. और अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, if it is not treated in time, they may even spread anywhere on the body which are not even moist, like even it can come on the face. Okay. ठीक है. So fungus grow very fast, they spread very fast, they are contagious, they spread from one family member to other family member. So it is very important to identify the fungal infection early and start the treatment at the earliest before it spreads in you or to the others. Okay. And doctor, how to take care of fungal infection and how to tackle it? See, first the very important thing to take care of fungal infection, अगर आ गया है तो जैसा भी मैंने बोला कि detect early and start the treatment early. Do not self-medicate for fungal infection. It's a request because there are so many market creams कि अगर आप किसी को भी बोलोगे बाहर की या I am getting itching in my private areas or anything this, अच्छा तो fungal infection हुआ है, start this cream. But these are mixed creams. अगर आप कोई अप्लाई भी कर रहे हो तो बी श्योर इट्स अ सिंगल कंटेंट क्रीम. यू शुड नो व्हाट यू आर अप्लाइंग. जो मिक्स क्रीम्स आती है, इट हैज 4 to 5 कंटेंट्स इन द क्रीम, जिसमें से ओनली वन इज इफेक्टिव फॉर यू, अदर 4 में क्रिएट द साइड इफेक्ट और द एलर्जी. स्पेशली दीज आर ऑल स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स. फंगल इन्फेक्शन में स्टेरॉइड इज अ बिग नो नो. बिल्कुल नहीं. स्टेरॉइड विल इंक्रीज द फंगल इन्फेक्शन लाइक एनीथिंग. So you should know what are you applying, and preferably only with a doctor's prescription. Do not self-medicate with fungus because they grow very fast and they जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंच रहे हो तब तक वो आपके बॉडी में इतना फैल गया है और आपसे और भी लोगों को फैल गया है. तो इस वजह से we are increasing the problem खुद से. So do not self-medicate. दूसरा चीज ये है कि हमको ऐसा लगता है कि ठीक है इचिंग हो रहा है, मैंने पाउडर लगा लिया, क्रीम लगा लिया, ओके. बट फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ओरल एंड टॉपिकल बोथ द मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप सिर्फ क्रीम्स लगा के उसको क्योर नहीं कर सकते हो, या सिर्फ क्रीम लगाने में घंटाला आता है, स्टिकी होता है, तो मैं सिर्फ टैबलेट्स खा लेता हूँ, वो भी नहीं होगा. यू हैव टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल एंड टॉपिकल. बोथ द मेडिकेशंस शुड बी यूज्ड. एंड सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट मैं फील करती हूँ कि कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या होता है, फंगल इन्फेक्शंस आर एक्सट्रीमली इची, है ना. फंगस जो है वो आपको इचिंग पहले स्टार्ट होता है, रैश बाद में दिखने स्टार्ट होता है. And when till the time these organisms are on your skin, they'll scratch like anything. ये itching scratching sensation आप जितना scratch करोगे, it's a stimulus for them. ये उतना ही बढ़ेगा और spread होगा.
तो हमको क्या लगता है whenever we start the treatment, हाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, हमारा इचिंग स्टॉप हो गया, नाउ वी आर डन, ये धीरे धीरे चला जाएगा अपने आप। मतलब फंगल इन्फेक्शन अपने आप नहीं जाता, वायरल इन्फेक्शन 2 नहीं तो 8 दिन में चला जाएगा, लेकिन फंगल इन्फेक्शन नहीं जाएगा। उसका रैश जाने के लिए यू नीड अ टॉपिकल ट्रीटमेंट, और वो न्यू क्रिएट ना हो इसके लिए यू नीड ओरल ट्रीटमेंट एंड कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट। जब तक आपका ईच एंड एवरी रैश पूरा क्लियर होके उसका स्पॉट, रैश आ रहा है, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, रैश तो सॉफ्ट हो जाता है, स्मूदन आउट हो जाता है, बट उसके स्पॉट्स रह जाते हैं, तो वी फील कि वो चला गया है, अभी सिर्फ दाग है, दाग चले जाएंगे। अगेन नो, दे नॉट गो ऑन देयर ओन। आई ऑलवेज सजेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये बोलती हूँ कि आपका ट्रीटमेंट जब तक वो दाग नहीं जा रहा है तब तक चलना चाहिए, जब तक योर दैट रैश वाला एरिया हैज सबसाइडेड एंड योर ओरिजिनल स्किन कलर हैज कम, मतलब रैश भी गया, स्पॉट्स भी गए, that time you're cleared of fungal infection, then you can stop all the medications, but till then continue the medication, हाँ, but same नहीं, with time to time with the improvement we can reduce the dose, we can reduce the medication, but the lotions are to be applied till the spot is gone, तब तक stop नहीं करना। बहुत लोग बीच में स्टॉप कर देते हैं, इसीलिए उनको रेकरेंसेस बहुत फास्ट होते हैं एंड दे एंड अप थिंकिंग अरे फंगल इन्फेक्शन तो कभी नहीं जाता है, दवाई बंद करते ही वापस आ जाता है, बिकॉज आप रॉन्ग टाइम पे दवाई बंद कर रहे हो, इट वाज नॉट क्लियर्ड, उसको स्पॉट्स जाने तक क्लियर करो फिर बंद करो, इट विल नॉट कम, इट विल नॉट कम इफ यू टेक गुड केयर, इट विल नॉट कम वेरी इजी। Right. So with fungal infections, we need to be very careful. उसका treatment कराना है, topical and medication दोनों चलता है, दोनों लेना है, और treatment का course complete कराना है, और सबसे जरूरी self medication नहीं करना है। हो सकता है कि आप anti fungal creams लेके लगा रहे हो और वो fungal infection हो ही ना, तो बहुत जरूरी है कि पहले तो डायग्नोस हो कि प्रॉब्लम क्या है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाए। सो स्पेशली बिकॉज ड्यूरिंग मॉनसून फंगल इन्फेक्शन बहुत आम हो जाता है, तो प्लीज व्यूअर्स टेक केयर ऑफ योर स्किन, take care of yourself. If you see there is any problem on your skin, please go and contact your dermatologist. Don't self medicate. Another thing, doctor, as you said कि अगर हो गया है तो ये करना है, लेकिन हो ही ना, we always say prevention is better than cure. Prevent करने के लिए what we can do. वेरी ट्रू, एज आई से, बिकॉज प्रिवेंशन तो सबसे पहले करना ही है, और जिनको हील भी किया है उनको भी आई सजेस्ट कि ऐसा नहीं है कि आप क्लियर हो गए, आपको कभी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, यू स्टिल हैव टू डू प्रिवेंशन केयर for avoiding again getting the fungal infection. Now prevention mein it's very easy, always if we understand the cause or the reason of any disease, it's very easy to understand the preventive factors. So for fungus अगर हम बोल रहे हैं कि moisture नहीं चाहिए, तो it's very important कि हम ये inner areas को always dry रखें. So keep these areas dry. If you feel you sweat a lot, keep a napkin with you, tap the sweat frequently, or you can use dusting powders to keep these areas dry. You can use these dusting powders 2 to 4 times a day. Whenever you feel, every 2 hourly you can apply in the afternoon. So one thing is keep the inner areas dry. Second is use dusting powders. Third is you wear loose clothing, not very tight. Avoid jeans, because denim material, jeans material, tight clothing will again increase the moisture inside. So and it's very tight, so it's too humid inside, and the moisture is locked, and it will actually increase the fungal infection. So wear loose clothing, ironed clothing, and use dusting powders. You can use, if you sweat a lot and you feel बहुत बार होता है इस सीजन में आपके स्वेट का ओडर आता है, many people complain कि recently my sweat has started giving very bad smell. This is because it stays on your skin for a longer time, because आप तो sweat कर रहे हो, and because of the humid climate it is making it a home for a lot of organisms. So your sweat suddenly starts smelling very bad, so you have to tap the sweat regularly, apply the powder to keep it dry, so that usme organisms or germs grow na ho and they don't give you bad smell. And you can also use antifungal soaps.
If somebody's skin not only inner areas, I sweat a lot, full body में हर जगह से sweat हो रहा है, my palms and soles are sweating, my face is sweating everywhere, you can use antifungal soap for the season क्योंकि ये आपके germs dirts को clean रखेगा. Dettol soap doesn't work against fungal infection. आप antifungal soap use कीजिए for the season. If you sweat a lot and if you are very prone to fungal infection, आपको बहुत frequently होता है, हर मानसून में या हर समर में आपको फंगल हो रहा है, that means your skin is very prone for fungus. तो जैसे ही सीजन आता है, start these two habits, use antifungal soap and use dusting powders to keep these areas dry. And of course the clothing wala thing, loose clothes and iron clothes. Right, that was really very helpful. And doctor, what is the treatment for fungal infections? See, as I said, fungal infection में oral treatment मतलब Right. tablets, topical treatment मतलब creams, dusting powders and soaps. These are the four main treatment options, and according to do you need all four or you need only 2 or 3, that will be decided by your dermatologist. But oral medication is very important. Orally आपको एक antifungal drug लेना जरूरी है, एक antihistamine drug लेना जरूरी है to control the symptoms. Then topically again antifungal creams वो use करना है, but no OTC medication, only antifungal prescribed medication. तो topical creams use करना है. And then dusting powders में आप कोई भी clotrimazole containing, ketoconazole containing और liliconazole containing dusting powders use कर सकते हो. And soap if required, as I said, if you sweat a lot, if you feel you get very frequently fungal infection, we can prescribe soaps also. Or especially extensive body fungal infection लेके जो आते हैं, who come very late, like people are suffering since years with fungal infection and they are just trying their own medications for years till they get fed up and till there is no normal skin left on the body. That time they turn up and they appear to a doctor. It's a very sad situation. You should not neglect your skin, or you should not postpone your skin in treatments for so late. So जब extensive body affected होता है, तो I start soap also for cleansing, and this is the oral medication, topical medication, powders and soaps. Right. So the most important thing is that in case we have any itching, rashes, etc., we need to go and consult a doctor. In case something is bothering you over your skin, please go and consult your doctor rather than waiting कि ये तो अपने आप चला जाएगा, या फिर खुद से ही मेडिकेशन करना, या दोस्त से पूछ लिया उसको भी ये प्रॉब्लम हुआ था. सब अलग हैं, सबके रीजंस अलग हो सकते हैं. हो सकता है आपको फंगल इन्फेक्शन है, किसी और को कुछ और हुआ हो, तो प्लीज सेल्फ मेडिकेशन ओवर द मेडिकेशन ना करें. गो एंड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट. कुछ व्यूज के क्वेश्चंस. Just a minute. Yes. And fungal infection, if you treat early, 8 दिन में भी जा सकता है, and if you delay, वो 6 महीने में भी नहीं जाएगा. So, फंगस जो है, वायरस को तो भी हमारा इम्यूनिटी फाइट कर लेता है, बट फंगस जो है इट इज वेरी वेरी ट्रिकी, वो नहीं हील होता है. सो प्लीज डू नॉट neglect any kind of rash which you suspect it may be a fungal rash or something. Please consult a doctor immediately before self medicating. और ये आपको तो परेशान कर ही रहा है, as doctor have already mentioned कि वो contagious भी होता है, तो आपसे आपके family members को भी हो सकता है, दूसरों को भी. You should keep your clothing separate. If any one family member in the family is affected, उनके clothes separate wash होने चाहिए. उनके towel, hand towel जो जनरली कॉमन होता है कि हाथ पोंछने का नैपकिन कॉमन है बेसिन पे, नो. इफ एनी वन मेंबर इज अफेक्टेड इन द फैमिली, उनका क्लॉथिंग सेपरेट वॉश होना चाहिए, उनका क्लॉथिंग सेपरेट मेंटेन होना चाहिए टू अवॉइड द इन्फेक्शन टू द अदर फैमिली मेंबर्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, now we'll also take some of our viewers questions. हमारे साथ इशिता रमन है, पूछ रही हैं, is it safe to take antifungals for long term? If it is doctors prescribed, it is safe because doctors आपका level of severity देख के ही आपको continue करवाएंगे. Plus dose is very important. You cannot take the same dose for the longer time. With time, as your rash is decreasing, as your symptoms are decreasing, as the severity is decreasing, the medications or the doses of the medication has to be reduced. So सेल्फ मेडिकेट लॉन्ग टर्म नहीं लो. कई बार होता है कि मैंने एक 15 डेज का कोर्स बना के दिया है, the patient is taking the same dose, the same medication for 6 months at a stretch.
So they are overdosing themselves. वो dose required नहीं है. After 1 month, your body does not need the same dose, but still you are giving it. तो overdosing नहीं करना है. Long term safe है if it is prescribed by a doctor after examining you. Right. हमारे साथ अहाना खन्ना है, पूछ रही हैं मैम, how to take care of sensitive skin during rainy season. Sensitive skin को जैसे मैंने बोला कि do not apply too many products, do not use makeup, cleanse regularly. Sensitive skin cleansers आते हैं, gentle skin cleansers. Use those cleansers, apply a moisturizer and choose a very hypoallergenic sunscreens आते हैं, non-comedogenic, oil free, non-greasy, non-comedogenic, matte finish sunscreens होते हैं. You can use these sunscreens for sensitive skin because these have very less ingredients. So there is very less chances of sensitive skin to create irritant reaction to these products. So use limited products, a good matte finish products, and very less makeup for sensitive skin. Avoid too much of products on your skin and use a very gentle cleanser. Okay. Pari Dubey पूछ रही हैं, how long does it take for a fungal infection to clear up? Just I mentioned, अगर आप सही टाइम पे आए हो, आप 8 दिन में भी क्लियर हो जाओगे. और अगर आप बहुत बढ़ा के लाइक पूरा स्प्रेड आउट करके आए हैं तो इट में टेक आइडियली एज आई से एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट पीपल रीच अ डर्मेटोलॉजिस्ट वेरी लेट, नॉट वेरी अर्ली. I hope after this video people get aware and they actually consult a doctor at the early stage only. तो जनरली 3 to 4 months लगता है if it is averagely affected. अर्ली स्टेज में वो आपका 15 days 1 month में भी चला जाएगा, अदरवाइज 3 to 4 months लग सकते हैं. ओके, तो जैसे कि डॉक्टर ने कहा, अगर आप जल्दी जाएंगे, जितनी जल्दी जाएंगे उतना अच्छा है, तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए. रवि पूछ रहे हैं, अगेन द सेम क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट क्या मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत है बारिश के मौसम में भी? यस, एज आई सेड, बारिश के मौसम में भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत है क्योंकि मॉइस्चराइजर इज नॉट ऑयल, इट्स वाटर बेस्ड. तो हाइड्रेशन की जरूरत आपको है बिकॉज बाहर का जो ह्यूमिड क्लाइमेट है, एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, इन सब की वजह से वाटर लॉस हो रहा है. सो यू नीड टू गिव अ वाटर बैलेंस टू योर स्किन. सो मॉइस्चराइजर इज नॉट like oil, you are putting oily product on your skin. It's a water based product. Just choose a proper moisturizer. Right. Again, you can read non greasy or non comedogenic moisturizer on the pack and that is good to go. Exactly. और ये काफी कुछ वैसा ही है जैसे बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आप कहें कि आपको पानी पीने की क्या जरूरत है, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, तो जब बॉडी को पानी की जरूरत है तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर की भी जरूरत है. And Dr. Trupti, as you know, we are about to sum up the whole session. Any takeaway message for our viewers? Takeaway message, I'll just say कि just identify कि हर सीजन के लिए आपका स्किन अलग तरीके से रिएक्ट करता है, अलग तरीके से अफेक्ट होता है. सो अंडरस्टैंड सीजन वाइज बेटर स्किन केयर. बहुत इजी होता है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, जस्ट दैट अ राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट सीजन is very important. Baki cleanse, moisturizing sunscreen is the basic skincare routine for all the year round. Just cleanser, जैसे विंटर्स आते हैं तो क्लेंजर्स माइल्ड होना है, तभी आप ज्यादा सैलिसिलिक ग्लाइकोलिक वाले भी नहीं यूज कर सकते हैं. सो स्किन केयर रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सीजन. इट इज नॉट कि ये सीजन में ज्यादा केयर करना है, ये सीजन में कम केयर करना है, नहीं. बेसिक रूटीन फॉलो करना है. इफ यू वांट योर स्किन टू बी हेल्दी एंड ग्लोइंग, आप एक बेसिक केयर मेंटेन करो तो आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत कम पड़ेगी अगर आप अच्छे से मेंटेन करेंगे. ईट हेल्दी, ईट गुड, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर ऑल द ईयर राउंड. योर बॉडी नीड्स लॉट ऑफ हाइड्रेशन. आइडियली 2 to 3 liters ऑफ वाटर पर डे इंटेक होना चाहिए एनी सीजन, इन एनी सीजन. सो एक बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करो एंड जो भी आप बारिश में भीग रहे हो, एंजॉय द वेदर, एंजॉय इट थॉरली, बट अलॉन्ग विथ फ्यू स्किन केयर अवेयरनेस इन द माइंड. आप उसको माइंड में रख के आप एंजॉय करो वेदर, तो लॉन्ग रन में भी यू विल एंजॉय द वेदर. नहीं तो मॉनसून जाने के बाद यू सफर ऑल द प्रॉब्लम्स which are created because of your very good monsoon enjoyment. So enjoy the weather with awareness and with your taking care of your health.
That was very informative, Dr. Trupti. Thank you so very much for your valuable time, and we really look forward for many more such sessions in coming times. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure connecting with you all, and pleasure talking to you. Thank you, everyone. Thank you. It's again a pleasure for all of us. It was wonderful having you. And viewers, thank you for your excellent participation. And for more information and updates on skin health and skincare, please stay connected on our FB page, Beautiful Spotless Skin. We are also available on YouTube, Twitter, Instagram. Thank you. Have a great day ahead. Goodbye. Thank you, everyone.